Hello friends, welcome back to Jinex Academy. In today's video, we are going to build a fun balloon pop game in a PictoBlox. So let's get started. चलिए इसके लिए मैंने एम लिया हुआ है, स्प्राइट और बलून लिया हुआ है और वेरिएबल में स्कोर बना के लिया है वेरिएबल. Let's start aim coding. First, when green flag click, then next add the go to front layer block. So this makes sure the aim sprite always stay above the balloon so the player can see it clearly. Then adding forever loop. Inside the forever block, add go to mouse pointer. Then next we are adding if condition. Add an if mouse down block. This block checks whether the player has clicked the mouse. Then I'm inserting sound also. Start sound. PEW. Pew. Done. स्कोर में इस साइड में सेट करके लेती हूँ और एम को थोड़ा सेंटर में प्लेस करती हूँ. डन. तो अभी हम बलून की सेटिंग करके लेंगे. सबसे फर्स्ट हम व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, फिर हम फॉरएवर लूप का इस्तेमाल करेंगे. देन इसमें हम क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ ऐड कर रहे हैं. Then wait 1 second. After creating a balloon, add wait 1 second block. This creates a 1 second gap before the next balloon appear. Done. उसके बाद में when I start as a clone, शो हो जाए अपना जो बलून है. Then go to random position जिसमें हम पिक रैंडम ऐड करेंगे. राइट. इससे क्या होगा? Place the balloon at a random X position at the bottom of the stage. This way, every balloon starts from a different location. Then we are adding switch costume. Now it's the same pick random 1 to 5. This randomly changes the balloon's color, making the game more attractive. Next, we are using glide block. The balloon will slowly move from the bottom to the top of the screen. So I have also used a random glide time between 1 and 5 seconds. So every balloon moves at a different speed. Afterward, delete the clone. Delete this clone. Done. One more time I'm using when I start as a clone. Wait until का use कर रहे हैं. Inside the wait until block, use the add and operator. The first condition is a mouse down, which checks whether the player has clicked the mouse. The second condition is a touching aim, which checks whether the aim sprite is touching the balloon. Afterward, delete this clone. सेट करके ले रहे. चलो अभी रन करके देखते हैं हम लोग. यहाँ पे स्कोर पहले सेट करके लेते हैं. सेट स्कोर एंड चेंज स्कोर. सेट स्कोर व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक के यहाँ पे स्कोर को सिलेक्ट करेंगे. देन चेंज स्कोर बाय 1. डन. तो अभी हम रन करके देखते हैं. वाव. And that's how we create a balloon pop game in a PictoBlox. I hope you enjoyed this tutorial and learned something new today. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to Jinex Academy. Thank you.